everyone, welcome back to my YouTube channel Blessed Twinkle. Today we are gonna discuss about one of the most important topic for class 11, and we are gonna discuss about human heart. Actually, basic. Today we are gonna discuss about its layers, its structure, its chambers in detail, and we are also gonna discuss about the phases of heartbeat. So if you are new in my channel, so make sure to subscribe along with the bell icon. So moving with the human heart. The human heart is a muscular organ that pumps blood throughout the body. It is located in the chest cavity, slightly to the left of the sternum, and is protected by the rib cage. अब यहाँ पे हमें ह्यूमन हार्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंप्स करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट, कहाँ पे, स्टर्नम के, और प्रोटेक्टेड होता है किससे, रिब केज से। द हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ अ फिस्ट एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट atrium and the left ventricle. And we have different kinds of valve like tricuspid valve or bicuspid valve, or we can say mitral valve. The human heart has somewhat conical form and is enclosed by pericardium. Okay, it is located between lungs with 1/3 situated at the right and 2/3 on the left of the middle line just behind the sternum. Okay, now I think so you get the actual location of the human heart. Now first of all we are going to discuss about the layers, and then we are going to discuss about the chambers. The human heart is composed of 3 main layers: the epicardium, the myocardium, and the endocardium. Okay, first of all I am going to give you the one-line introduction to the 3 layers: epicardium, myocardium, and endocardium. Okay, listen to me very carefully. The epicardium is the outer layer of the wall of the heart, and it is formed by the visceral layer of the serous pericardium. Myocardium is a muscular middle layer of the wall of the heart and has excitable tissues and conducting system. And the endocardium is a middle concentric layer, a subendocardial layer. The rest of the heart is composed of mainly of the subepicardial and subendocardial layers. Okay, so now we are going to go in detail of these layers. The epicardium is the outermost layer of the heart, as I have told you, and is composed of connective tissues and a thin layer of epithelial cell. It is also known as the visceral pericardium. अब visceral pericardium इसे क्यों कहा जाता है? Because it forms the inner lining of pericardium. पेरिकार्डियम की जो इनर लाइनिंग होती है उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है, अ सैक दैट इनक्लोजेस द हार्ट. देन वी हैव मायोकार्डियम. द मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट and is composed of the cardiac muscle cells. These cells are responsible for the heart's pumping action. अब मैंने बोला इनके पास जो होते हैं एक्साइटेड एबल सेल्स होते हैं और इनके पास कंडक्टिंग सिस्टम भी होता है. वो जो सेल्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड कोऑर्डिनेट दी heartbeat. The myocardium is the thickest in the left ventricle, which is responsible for pumping oxygenated blood to the rest of the body. Now it was the role of it. Endocardium. The endocardium is the innermost layer of the heart and is composed of a thin layer of connective tissue and endothelial tissue cells. It lines the inside of the heart chambers and covers the heart valves. Okay, अब ये कहाँ पे होते हैं, किस को कवर करते हैं? दे आर फाउंड इनसाइड द चैम्बर्स. लाइक वी हैव 4 चैम्बर्स: एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये उनके अंदर मौजूद होते हैं और कवर्स करते हैं हार्ट वॉल्स को, लाइक बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल. द एंडोकार्डियम इज कंटिन्यूअस विद द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट एंटर्स एंड एग्जिट द हार्ट. The heart is also surrounded by the pericardium, a sac that contains a small amount of fluid that lubricates the heart as it beats. अब ये थोड़ा सा permeable होता है, I would say. The pericardium is composed of 2 layers.
the outer fibrous layer and the inner serous layer. Okay, हमारे पास ये जो एंडोकार्डियम थे ये विस्ट्रल पेरिकार्डियम में मौजूद थे. Okay, on the visceral layer, visceral serous layer. Overall, the human heart is a complex organ that plays a critical role in the blood circulatory system. Its layers work together to ensure that blood is pumped efficiently throughout the body. Okay, these were the role of layers. Now we are going to discuss about their chambers. The human heart is a four-chambered muscular organ that is roughly the size of a fist. It is located in the chest cavity, slightly to the left of the sternum, and is protected by the rib cage. The heart is divided into four chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. Then we have right atrium. The right atrium is the upper chamber of the heart that receives the deoxygenated blood from the body. It's separated from the right ventricle by a tricuspid wall. हमारे पास जो ब्लड एंटर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ब्लड हमारे पास बॉडी से एंटर हो रहा है, वो हमारे पास राइट एट्रियम के ज़रिए एंटर हो रहा है. और ये जब राइट वेंट्रिकल में जाता है, सो देयर इज़ अ वॉल्व होता है जो कि बाद में राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड को आने नहीं देता. दैट वॉल्व इज कॉल्ड tricuspid valve. Then we have right ventricle. The right ventricle is the lower chamber of the heart that receives the blood from the right atrium. हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है वो लोअर चैम्बर है. हमारे पास दो अपर चैम्बर हैं और दो लोअर चैम्बर्स हैं. दो अपर चैम्बर्स में हमारे पास राइट एट्रियम है एंड राइट वेंट्रिकल है, और लोअर चैम्बर में हमारे पास लोअर चैम्बर्स में हमारे पास वेंट्रिकल है और अपर चैम्बर्स में हमारे पास एट्रियम है. ओके, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज. राइट वेंट्रिकल जो है हमारे पास लेता है ब्लड किससे, राइट एट्रियम्स के, और पंप कर देता है लंग्स के पास फॉर द ऑक्सीजनेशन. ओके, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये थोड़ा सा सेपरेट होता है किसके ज़रिए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ज़रिए. द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वॉल एंड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पंप करता है, पल्मोनरी वॉल और पल्मोनरी आर्टरी, जो कि बाद में कहाँ जाती है, हमारे पास लंग्स में जाती है फॉर दी ऑक्सीजनेशन. द लेफ्ट एट्रियम इज द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट. ओके, atriums are the upper chambers of the heart that receives oxygenated blood from the lungs. It is separated from the left ventricle by mitral valve. अब वहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम जो राइट वेंट्रिकल से सेपरेट था वो था ट्राइकस्पिड वॉल्व से. इट इज़ सेपरेटेड बाय मिट्रल वॉल्व और वी कैन से बाइकस्पिड वॉल्व. लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव द ब्लड. मतलब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास लंग्स से ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब उसने पास कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को. लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्स इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब वो पूरी बॉडी में पंप होगा ब्लड. इट इज़ द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट बिकॉज, ओके, ये थिकेस्ट चैम्बर है हार्ट का. क्यों? इट हैज़ टू पम्प ब्लड टू द इंटायर बॉडी. अब इसे पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प करना होगा. The left ventricle blood pumps blood through the aortic valves and into the aorta. Aorta और aortic valves के ज़रिए ये पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है. The heart is also surrounded by a double layered sac called pericardium, as I have told you before. The outer layer of the pericardium is made up of tough fibrous tissues, while the inner layer is thin, smooth membrane and that produces a small amount of fluid to lubricate the heart as it beats. The overall structure of the human heart is complex and highly specialized to ensure that the blood is pumped efficiently throughout the body. So now I'm going to just give you the basic introduction about the phases of the heartbeat. Actually, what are heartbeats? The contraction of the heart chambers, heart की contraction को हम क्या कहेंगे, heartbeats कहेंगे. एक normal human heart 70 beats 72 times per minute at rest. Okay, और हमारे पास cardiac cycle क्या होती है, alternating contraction and relaxation of the heart chambers is called cardiac cycle. heart chambers हमारे पास 4 chambers हैं, atrium, right ventricle, left atrium, right ventricle. इनकी contraction and relaxation means when they are contracted
and when they are relaxed during the flow of blood, it is called cardiac cycle. Now, when the human heart just produces the cardiac cycle, it produces a sound that is lub dub. Lub is caused by the vibration of the heart when the arterioventricular valves closes, and dub is heard when the vibration occurs due to closing of semilunar valves. Arterioventricular valves are those valves like tricuspid or bicuspid valves. When they are closed, so lub is caused by their vibration. And dub is caused due to the closing of semilunar valves, means those valves which are not associated with any of the chamber. Like ventricles है हमारे पास, pulmonary artery और pulmonary vein में हमारे पास जब ब्लड जा रहा था तो वहाँ पे एक वॉल्व था, दैट इज सेमिलुनर वॉल्व. और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड जा रहा था एओर्टा में, हमारे पास वहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व था. The dub is heard when the vibration occurs due to the closing of the semilunar valves. So this was the phases of the heartbeat, and I hope that you all got this human heart. And if you haven't cleared any of your point, you can ask me in my comment sections. I will definitely try to answer you. So thanks for watching. Make sure to subscribe to my channel Blessed Twinkle. Like and share the video. Meet you guys in the next video. Allah Hafiz.